हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तानिया और आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने none other than Namma Bengaluru, and I will show you some places which you may have not visited before. So let's start the first episode of this series, which I will call as Exploring Bangalore with Tanya. Come with me. So today I have chosen this place called Basavana Gudi to start this series because I have heard that there are many legendary places to eat, as well as there are many old temples and there are many other things to visit. So let's start this journey with Basavana Gudi. Whenever we think about going somewhere for leisure, our mind often wanders to destinations beyond our city limits, overlooking the treasures nested within our own city. Through this series, we will try to rediscover Bangalore city with touristy eyes. So our first stop of the day is the legendary Brahmins for some hot piping South Indian food. So they are here from over 50 years, from 1965. Can you imagine? And like their menu from the inception has stayed the same. So let's try some, shall we? So we have taken one variety of everything that they have. They have like very minimalistic menu till date, and they have these things like idli, vada, and the kara bhat, the kesari bhat. Only these things in their menu. तो स्टार्ट करते हैं हमारा इडली के साथ में, इडली एंड वड़ा. सो दे सर्व दिस इडली विद द लाइक वेरी वाटरी चटनी जो कि उनका फेमस है. सो लेट्स टेस्ट इट नाउ. So this is a नारियल and curry leaves chutney. काफ़ी thin in consistency, and for this they are famous actually. This vada is, I think, one of the best vada that I have tried in my life. It's so crunchy and not really that much oily. Filter coffee is like really strong. I just tried it out. Good quantity of filter coffee that you are getting here. It's not a small one. This is the kara bhat. Kara bhat means upma, and they have made it with all the carrots, coriander and all. तो try करके देखते हैं कैसा है. So that the upma is actually tasting very different. Like it's not like the usual upma that you have tried. Like how can I explain? The taste is little different. You should try this out. It's like mild in taste. थोड़ा सा sweetness भी है. Next up is the this is a kesari bhat, and this is having like cashews. You can see it's having cashews. Good one, but it's a little more like sweet. I don't like that much sweetness. तो अगर आपको इतना ज़्यादा sweet नहीं पसंद है, maybe you might not like that much. But otherwise it's tastes good. Like वो घी का एक taste आ रहा है, and it's having the dry fruits and everything. थोड़ा सा अगर sweetness कम होता तो मेरे लिए best होता. Now let's go to our next destination, which is the Big Bull Temple. So हमारा second stop है the Big Bull Temple, which was established in 1537 by founder of Bangalore, Kempe Gowda. So let's check this temple out. Nandi is the biggest worshipper of Shiva, and this is a temple dedicated for Nandi. And here, if you see, there are some statues. So this is depicting the peanut fair that happens here annually. यहाँ पे annual एक peanut fair होता है. This temple reflects the Vijayanagar architectural style, since Kempe Gowda built it in 1537 under Vijayanagar Empire.
This temple, also known as Dodda Basavanagudi, is one of the largest Nandi temples in the world. Standing in the premises of the temple, you will feel a sense of tranquility, but it also serves a gateway to the rich tapestry of Indian history. In the Garbhagriha of the temple stands the monolith granite idol of Nandi. The height of the idol is approximately 15 feet and it is approximately 20 feet long. So behind me is the temple और हमारा दर्शन हो गया. It was amazing दर्शन. तो यहाँ पे इस टेम्पल का बहुत बड़ा लेजेंड है. ये पहले तो सेकंड नंबर पे इसका स्थान है एज पर दी लाइक साइज ऑफ द नंदी. सो ये सेकंड लार्जेस्ट नंदी टेम्पल है इन इंडिया. अंदर पूरा हिस्ट्री इज मेंशन्ड. इफ़ यू कम हियर यू कैन गो थ्रू इट बट आई विल टेल यू इन शॉर्ट. तो यहाँ पे ना पूरा फार्म होता था. जो ये श्राइन है जहाँ पे बना हुआ है ये टेम्पल, वहाँ पे पहले ग्राउंडनट का पूरा फार्म होता था. And one day one bull entered the farm and it ruined all the crops. तो farmers बहुत ही distress में आ गए. तो वो repeatedly ऐसा होता जा रहा था. तो one day what happened, एक farmer ने उस bull के सर पे कुछ तो मार दिया and that bull turned into statue. So that statue started growing day by day. So they got afraid and they prayed to Lord Shiva, and Lord Shiva came and he put a trishul on the Nandi statue's head, and that's when the statue stopped growing. So from that day there is a custom of offering the like first जो प्रोड्यूस होता है ग्राउंडनट्स का उसको ऑफ़र किया जाता है टू लॉर्ड नंदी एंड देन ओनली उसका सेल होता है. तो यहाँ पे हर साल एनुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर का फेस्ट होता है, यू कैन से फॉर ग्राउंड नट्स. तो यहाँ पे वो दर्शाया हुआ है. तो ये इस फेस्ट में सबसे पहले प्रोड्यूस जो है नंदी को ऑफ़र करते हैं, उसके बाद में सेल होती है और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं ग्राउंड नट्स खरीदने के लिए. तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आइए. मैं यहाँ पे बैंगलोर में 4 साल रही हूँ फॉर इंजीनियरिंग एंड नाउ अगेन 2 years आई एम स्टेइंग हियर. इन टोटल 6 years आई हैव नॉट नोन अबाउट दिस प्लेस एंड आई हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आई एम श्योर मैनी ऑफ यू लाइक मस्ट हैव नॉट विजिटेड टू दिस प्लेस. सो आप लोग भी यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए ज़रूर. The temple is open all week and the timings of visit is 6 a.m. to 12 a.m. and in the evening 5:30 to 9 p.m. यहाँ पे ना कुछ शॉप्स भी हैं. कुछ चीज़ें यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मिल रही है लाइक घर में सजाने की या स्टैचूज़ वगैरह या पूजा के लिए. तो आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हो. लेट्स चेक आउट कि क्या है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइडल्स मिल रहे हैं. गणेश नंदी शिवा का है. गाड़ी में घर में रख लेते हैं, चाबी रख लेते हैं. पंचधातु का है, ब्रास का है. ब्रास का है. ये ले लो 500 का है. वो वाला दिखाइए, वो वाला हाथ में. ये वाला भी 800 रुपीज आता है. यहाँ पे ना एक टूर मैप भी दिया हुआ है. बसवनागुड़ी में ना बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स है. तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो वी आर currently at where we are, Dodda Basavana temple. There are many other things that you can explore. How much? 350. यहाँ पे काफ़ी सारे होम डेकोर के गणेशा के आइडल्स भी मिल रहे थे which you can buy. So that was all for this video. We are heading back to home right now and we will explore more such places in our next upcoming episode. So stay tuned for that and do subscribe to my channel and please hit the like button if you like this video. Bye bye.